We'll go to the third chapter, that's basic analytical techniques. What we are talking about? Basic analytical techniques. Basic analytical techniques. Pay attention. What do you understand by this term? Analysis means what? Analyze karna. Analyze karna means what? It means to verify the fact. To verify. Analysis deals with observation. Analysis deals with observations. Analysis deals with what? Observation. So basis of analysis. So on the basis of analysis, what we can do? Identify and obtain the properties of various substances. We can identify and obtain the properties of various substances. Understanding? Analysis. That is why analytical techniques. हमें नेचर में मिलने वाले सब्सटेंसेस का एग्जैक्ट बिहेवियर पता होना चाहिए, उसके बारे में हमको एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज कैसे पता चलेगा? एनालिसिस करके। एनालिटिकल कम्स फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस। एनालिसिस क्यों जरूरी है? प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, नेचर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए एनालिसिस क्यों जरूरी है? टू बेसिकली फाइंड आउट what you are observing and what you are understanding, whether it is the same or it is different. That is why we say basic analytical techniques. ये important क्यों है पता है? This is important because nothing in nature is available to us in pure form. तो हम जिस चीज को प्योर समझ भी रहे हैं वो एक्चुअली प्योर नहीं है। तो हम उसके जो प्रॉपर्टीज समझ रहे हैं या हमें जो उसके प्रॉपर्टीज मिल रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअल प्रॉपर्टीज नहीं है। अंडरस्टैंडिंग? यस और नो? सो द पॉइंट इज वेरी क्लियर। व्हाट इज द पॉइंट? दैट नथिंग इन नेचर इज अवेलेबल in its pure form. So, understanding the exact properties of any substance is very essential. Understanding the exact properties of any substance is very essential.
क्योंकि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी ही नहीं पता चलेगा ना, तो उसका एग्जैक्ट प्रॉपर्टी नहीं पता है तो उसका यूज ही नहीं पता. If we don't know that salt tastes salty, in which food to add salt and in which food not to add salt, हम ये कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे. आज हमें उसका नेचर पता है, उसका टेस्ट पता है, उसका बिहेवियर पता है. Yes or no? So that is the thing. That is the point. That analysis becomes very important. क्यों? ताकि आपको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का एग्जैक्ट नेचर, एग्जैक्ट बिहेवियर समझ में. वरना नेचर बिहेवियर समझेगा ही नहीं तो आप फिर उसको पुट टू यूज कैसे करेंगे? हाउ विल यू पुट इट टू यूज? अंडरस्टैंड? You pick up a pen and you write on the book. You don't pick up a chalk and write it in your book, no? Yes. You know that chalk is meant to be used on board. Pen is meant to be used in the book. ये एनालिसिस हुआ है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस हुआ है जिससे पता चला है कि पेन के अंदर इंक है जो पेपर के सरफेस पे चिपकेगा, चॉक के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो बोर्ड के सरफेस पे चिपकेगा. Yes or no? Yeah. If you take a pen and you start writing on the board, will anybody be able to see what you are writing? Will you be able to write in the very first place? If I take this pen and write in your book, will I be able to write something? This pen is meant to be used on this screen. There is a special screen on which this special pen is to be used. Understanding? तो ये एनालिसिस एंड रिसर्च के बाद ही पता चला ना, वरना कैसे पता चलता? Now, let us go to the very basic thing. The basic thing is elements. What is the basic thing? Basic factor? Existence, element. Elements are existing in nature and these elements are what? Having various properties. What are they having? Various properties. So ये properties को understand करना, इन properties को ascertain करना हमारे लिए बहुत important होता है. It's very important for us to understand and ascertain these properties. Understand? Yes or no? Yes. And in order to do that, there are various methods of purification. True properties समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? Pure substance. And nature में सब कुछ कैसा मिलता है? Impure. Anything is available in nature in pure. Nature में कुछ भी pure form में available नहीं. So to understand the exact nature of any substance, we need to purify. किसी भी सब्सटेंस के एग्जैक्ट नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या जरूरी है? प्योरीफाई करना. एंड प्योरिफिकेशन के कई सारे तरीके. देयर आर वेरियस वेज टू प्योरीफाई सब्सटेंस. सो देयर आर वेरियस ways to purify substances. Now, what are the various ways to purify substances? There is something called as sublimation. There is something called as distillation. There is something called as fractional distillation. There is something called as crystallization. Again, there is fractional crystallization. There is chromatography. These are various ways to purify substances. अब
डिस्टिलेशन का हम यूज किधर करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ impure liquids. क्रिस्टलाइजेशन एंड फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कहां पर होता है? फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ impure solids. क्रोमेटोग्राफी purification of solids. Sublimation again. Purification of solids. So these are all the different ways by which we carry out the process of purification. Various ways of carrying out the process of purification. Purification जरूरी क्यों है? Purification जरूरी है सब्सटेंस के एग्जैक्ट नेचर को समझने के लिए. प्योर सब्सटेंस मिलेगा तो तुम उसका एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करोगे तो तुमको उसका एग्जैक्ट नेचर समझ में आएगा. अगर एनालिसिस ही नहीं करेंगे तो नेचर कैसे समझोगे? अगर एनालिसिस नहीं करेंगे तो नेचर कैसे समझेगा? नहीं समझेगा. Yes or no? Understood? Yeah. This is clear to everyone? Yeah. So what basically is analysis? To verify the fact. Analysis. Okay, we know that acid is acidic in nature and that base is basic in nature. Analysis करना पड़ेगा. उसमें लिटमस पेपर डाल के देखेंगे. You cannot straight away put your finger into it. गायब हो जाएगा. So you will analyze whether it is a acid or not. If it is acid, what type of acid is it? If it is a strong acid, is it a weak acid? Is it a strong base? Is it a weak base? Understanding? That is the thing with respect to analysis. Analysis करके हमें पता चलेगा कि हम जिस चीज को देख रहे हैं और हम जो उसे समझ रहे हैं क्या वो वही है या नहीं. Understand? Yes. सो एनालिसिस के बेसिस पे क्या आता है? रिपोर्ट. एनालिसिस रिपोर्ट. रिपोर्ट आए कि हाँ ये सब्सटेंस एसिडिक है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसको अगर यूज करना है तो लिमिटेड कंडीशंस में ही यूज करना पड़ेगा. इसको यूज करते वक्त हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा. हम इसको जनरली कैजुअली कहीं पर भी यूज नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड? Likewise for a weak acid, likewise for a weak base, likewise for a strong base, likewise for a salt, likewise for any reagent, any substance. आज कोई मेटल है तो हमें मालूम है कि वो मेटल एक हार्ड मेटल है या एक सॉफ्ट मेटल है. हार्ड मेटल है तो उसे कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है. सॉफ्ट मेटल है तो हमें कहां पर यूज करना है, कैसे यूज करना है. कौन से कंडीशंस में हम हार्ड मेटल को यूज करना प्रेफर करेंगे, कौन से कंडीशंस में हम सॉफ्ट मेटल को यूज करना प्रेफर करेंगे. ये सब क्यों पता है? क्योंकि हमने पहले उसको नेचर से निकाला. नेचर में हमें वो मिला कैसे? इम्प्योर फॉर्म में. फिर हमने उसको प्योरीफाई किया, इम्प्योरिटीज निकालकर हमने उसे प्योरीफाई किया. प्योरीफाई करने के बाद हम एनालाइज करने लग गए कि अगर ये मेटल है तो ये कितना मेटालिक है, क्या ये स्ट्रांगली मेटालिक है या फिर ये वीकली मेटालिक. अगर ये नॉन मेटल है तो ये कितना नॉन मेटालिक इन नेचर है. इज इट स्ट्रांगली नॉन मेटालिक और इज इट वीकली नॉन मेटालिक. If it's a metalloid, what type of a metalloid is it? Is it strongly metalloid in nature or it's weakly metalloid in nature? Understanding? Yeah. So that's about basic analytical techniques. Note this down fast. What do you understand by the term distillation? It is a method to purify
impure liquids. It is a method to purify impure liquids. Method to purify impure liquids. What exactly happens in this? Liquid or solution of liquid to be purified along with its impurities is taken in a round bottom class. सो लिक्विड या फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि लिक्विड के अंदर क्या है? इम्प्योरिटी है। वो लिक्विड का जिसको हमको क्या करना है? प्योरीफाई करना है। उसको हमने किस में ले लिया? राउंड बॉटम फ्लास्क। अब ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, इट इज सब्जेक्टेड टू व्हाट? हीटिंग। The round bottom flask is kept over a burner and allowed to heat. Round bottom flask is kept over the burner and it is allowed to heat. अब हीटिंग के वजह से क्या होगा? हीटिंग के वजह से क्या होगा? What will happen? What will happen? What will you notice? Due to heating, the liquid gradually begins to boil. Vapors of the liquid pass into the condenser. Yes or no? कंडेंसर में क्या है? कंडेंसर में क्या होता है? लिक्विड जो है कंडेंस, वेपर्स जो है लिक्विड के कंडेंस होकर के ये वायर कॉज है एंड यहां पर है बर्फ। अब यहां पर क्या है? अपना लिक्विड एंड उसके अंदर है कुछ इम्प्योरिटीज। अब इसको हमने जो है एक रबर कॉक से स्टील
ये जो है अपना कंडेंसर है एंड यहां पर एक अलग स्टैंड पे है अपना रिसीवर। अंडरस्टैंडिंग? तो होता क्या है, ये जो लिक्विड है इसके वेपर्स राइज होंगे, दिस विल पास इनटू द कंडेंस होकर कलेक्ट हो जाएगा। इसमें वाटर के लिए इनलेट एंड आउटलेट रहता है, वाटर जो कि इसको ठंडा रखता है। अंडरस्टैंडिंग? दिस इज फॉर द इनलेट एंड दिस इज फॉर द आउटलेट। समझे? तो ये ट्यूब जो है ठंडा रहेगा, तो यहां पर कौन आ रहे हैं, ये वेपर्स है ऑफ द लिक्विड। क्या ये वेपर्स ऑफ द लिक्विड। अब वो यहां पर पास होगा, कंडेंस होगा, कंडेंस होकर ये क्या अपना रिसीवर, जिसमें क्या कलेक्ट हो रहा है, pure liquid is getting condensed, pure liquid is getting condensed। आ रहा है समझ? अब जैसे जैसे यहां से जो लिक्विड है वेपराइज होकर निकलता जाएगा, इम्प्योरिटीज राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे सेटल होते जाएंगे, इम्प्योरिटीज राउंड बॉटम फ्लास्क में नीचे सेटल होते जाएंगे। तो इम्प्योरिटीज जैसे जैसे नीचे सेटल होते जाएंगे, अपने को पता चलता जाएगा कि प्योर लिक्विड रिसीवर में कलेक्ट होता जा रहा है। अल्टीमेटली अ पॉइंट विल कम वेयर सिर्फ सॉलिड इम्प्योरिटीज रह जाएंगे। दिस इज डिस्टिलेशन। अंडरस्टैंडिंग? So this is what is happening. Due to heating, liquid gradually begins to boil. Vapors of the liquid pass into the condenser. And condenser में पास होकर क्या हो रहा है? Vapors of the liquid pass into the condenser, get condensed and collected into the receiver. बट ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस है सिंपल डिस्टिलेशन। व्हाट इज दिस प्रोसेस? दिस प्रोसेस इज सिंपल डिस्टिलेशन। इम्प्योर लिक्विड है, उसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज है। इधर क्या है अपने पास? इधर अपने पास है इम्प्योर लिक्विड। समझ आ रहा है या नहीं सबको? इम्प्योर लिक्विड है। ये मैश जैसा जो एरिया है, ये जो बनाया हुआ है यहाँ पर, ये क्या है? ये है वायर गॉज। समझे? ये क्या करता है? ये स्टेबिलिटी देता है सरफेस को, जिसके ऊपर हम प्लास्टिक को सस्पेंड कर सकते। Of course, there is a holder with which the flask is held in place. There is a holder with which the flask is held in place. But हो क्या रहा है राउंड बॉटम फ्लास्क में? लिक्विड है, इम्प्योरिटीज है, वेपराइज हो रहा है, लिक्विड वेपराइज होकर स्टीम बन रहा है, गैस बन रहा है, कंडेंस हो रहा है, कंडेंस होकर रिसीवर में कलेक्ट हो रहा है। पीछे कौन छूट गया? इम्प्योरिटीज। तो हमने इम्प्योर लिक्विड से प्योर लिक्विड निकाल लिया, हमने इम्प्योर लिक्विड से प्योर लिक्विड निकाल लिया। अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी हैव डन? इम्प्योर लिक्विड से प्योर लिक्विड वी हैव एक्सट्रैक्टेड। अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? So that is how it is. That is simple distillation. ठीक है ना? अब इसी से मिलता जुलता है क्या? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा? सुनो, फर्स्ट हाफ ऑफ द एक्सपेरिमेंट विल बी एग्जैक्टली द सेम, बट यहां पर प्रॉब्लम क्या है? जो लिक्विड है ना हमारा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर लिक्विड्स। क्या? टू और मोर लिक्विड्स। दो लिक्विड्स है, सपोज अल्कोहल एंड वाटर। हमको दोनों को सेपरेट करना। आई वांट टू सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम वाटर। आई हैव अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर।
सॉलिड इंप्योरिटीज नहीं है मेरे पास। इस बार मेरे पास कौन है? दो मिक्सचर है किसका? लिक्विड्स का। मुझे उसको सेपरेट करना है। सो यू वांट टू सेपरेट इट, सो व्हाट यू विल डू? यू विल अरेंज फॉर 2 रिसीवर्स। मिक्सचर आपने राउंड बॉटम क्लास में ले लिया। नाउ व्हाट विल हैपन? हीट इट अप। जो लो बॉइलिंग लिक्विड, विच इज द लो बॉइलिंग लिक्विड? अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपैरिजन में बहुत, तो वो एक लोअर टेम्परेचर पे ही क्या होगा? वेपराइज होने लगे। हमने मिक्सचर को हीट किया, हमने नोटिस किया 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, लेट अस से एट 60 वी नोटिस alcohol vaporize. Alcohol vapors will come, pass into the condenser, get condensed, collected in the receiver. ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक अल्कोहल एंड वाटर के मिक्सचर में से अल्कोहल पूरी तरह से निकल नहीं जाए, क्योंकि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 60। अल्कोहल ने बोला बस 60 का टेम्परेचर आ गया भाई, हम वोलेटाइल है, हम वेपराइज होंगे, वी विल लीव द कंटेनर, वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक विद दिस वाटर। हम लोग वाटर के साथ इधर रुकने वाले नहीं है। अल्कोहल निकल गया कहां से? मिक्सचर में से। किसको पीछे छोड़ के? 65 डिग्री सेल्सियस वेपराइजेशन स्टॉप हो चुका था, टेम्परेचर आगे चला गया। अब हमें कोई वेपर्स नजर नहीं आ रहे थे। हमने तुरंत क्या किया? बर्नर का जो फ्लेम है उसको थोड़ा स्लो किया। बर्नर का फ्लेम फास्ट रहेगा, वाटर फटाफट 100 पे पहुंचेगा, 100 पे पहुंच के वाटर वेपराइज होना स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो बर्नर का फ्लेम थोड़ा स्लो कर दिया, सो दैट वी गेट टाइम। तुरंत कंडेंसर को निकाला, कंडेंसर को निकाल के वॉश किया। क्यों? क्योंकि कंडेंसर पे इनर सरफेस पे अल्कोहल के ड्रॉपलेट्स ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगली बार जब यहां से पानी आएगा, मिक्स होकर के आएगा अल्कोहल के साथ, ट्रेसिस में ही सही, मिक्स तो हो सकता है, ट्रेसिस में ही सही मिक्स तो हो ही सकता है, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो हमने कंडेंसर को निकाला, वॉश किया, ड्राई किया, फिट कर दिया। नहीं कंडेंसर को निकालो, नया कंडेंसर फिट कर दो, बट दैट विल इंक्रीज योर कॉस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। 2 कंडेंसर रखना पड़ रहा है, पहले ही तुम 2 रिसीवर के पीछे पैसा खर्चा कर चुके हो, एक्सपेरिमेंट को महंगा बनाते जा रहे हो। एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस महंगे बनेंगे तो सब इलॉन मस्क बन जाएंगे, महंगा महंगा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज डूइंग एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट्स। सो व्हाट वी डू? Before water reaches its boiling point, before water reaches, water is the higher boiling liquid, water is the, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे, इससे पहले हमने क्या किया? रिसीवर को निकाला, उसको वॉश किया, ड्राई किया और उसको वापस फिट कर दिया। अंडरस्टैंड? एंड हमने 2 रिसीवर जिसमें अल्कोहल कलेक्ट हुआ है उसको निकाल के नया रिसीवर रख दिया, क्योंकि अब इस बार इसमें से कौन कंडेंस होके आने वाला है? कौन आने वाला कंडेंस होके? सिंपल। जब आप इतना चेंजेस कर चुके हैं तो आप बर्नर का जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा वापस बढ़ा देते हैं। बर्नर हीट अप होते होते वाटर जो है 85 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे पहुंचा था, and in that time span of 5-10 minutes we have removed the condenser, washed the condenser, dried it up, connected it again, changed the receiver। अब टेम्परेचर फटाफट 85 से 100 पे जाएगा, 100 पे जाकर वाटर वेपराइज होना स्टार्ट होगा, वाटर कंडेंस होगा, कंडेंस होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाए। एंड इफ देर आर एनी impurities they are getting separated। अंडरस्टैंडिंग? यू आर हैविंग अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। इसका ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर कोई सॉलिड इंप्योरिटीज नहीं है, हो सकते हैं दैट इट कंटेन्स सम सॉलिड इंप्योरिटीज एंड दोज सॉलिड इंप्योरिटीज हैव टू बी सेपरेटेड। सो इट इज अल्कोहल, इट इज वाटर एंड इट इज सॉलिड इंप्योरिटीज। सो पहले हमने लो बॉइलिंग लिक्विड विच हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल, उसको बॉइल किया, वेपराइज किया, कंडेंसर से पास करके रिसीवर में कलेक्ट किया। देन केम द सेकंड लिक्विड वाटर
boiling, vaporizing, condensing, getting collected in the receiver. Two separate receivers with the two separate liquids. Two separate receivers with the two separate liquids. Is it understood? Yeah. Clear to everyone? Sure? Yeah. So that is about simple and fractional distillation. Fractional distillation किधर use होता है? When do we use fractional distillation? When do we use fractional distillation? Fractional distillation is used mixture of it is used when we have a mixture of two or more liquids to be purified. Fractional distillation. Fractional distillation. Please pay attention. Fractional distillation, it is used when you have two or more liquids to be purified. तो इसमें होता क्या है? The lower boiling liquid comes out first. Followed by the liquid having the higher boiling point. The lower boiling liquid comes out first, followed by the liquid having the higher boiling point. Is it understood? Yes. Yes or no? Yes. Clear है concept? Yeah. Come on, note this down. अलग अलग अल्कोहल्स का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है. All alcohols do not have the same boiling point. Crystallization. What exactly do you mean by this term? Crystallization. It is a method to purify impure solids. Method to purify impure solids. Method to purify impure solids. Now what happens ultimately in this process? The impure solid is taken and pulverized. Pulverized का मीनिंग क्या होता है? Pulverized का मीनिंग होता है made into a fine powder. It is pulverized, made into a fine powder. क्योंकि सॉलिड कोई पार्टिकल बड़ा छोटा कोई स्मूथ होगा कोई हार्ड कोई ग्रेटिंग कोई सॉफ्ट. इस प्रोसेस का जो इम्पैक्ट आएगा अगर पार्टिकल का साइज अलग अलग है, फील अलग अलग है, डायमेंशन अलग अलग है, तो प्रोसेस का इफेक्ट भी उस पर अलग अलग होगा. अपने को वो नहीं चाहिए. We want the impact of the process to be uniform. We want the impact of the process to be uniform. So हम क्या करते हैं? The impure solid is taken and it's pulverized. Pulverized करने के बाद
What after pulverizing? The solid is then dissolved in cold water. कोल्ड वाटर में डिजोल्व कर after this what the mixture is boiled to ensure कि अगर कोई ऐसा पार्टिकल है जो ठंडे पानी में डिजोल्व नहीं हुआ है तो गर्म पानी में तो डिजोल्व. So the mixture is then boiled to ensure that all the particles gets dissolved in water. तो आपने इम्प्योर सॉलिड लिए, पल्वराइज किया, पाउडर बनाया, ठंडे पानी में डिजोल्व किया, फिर भी अगर कुछ ऐसे पार्टिकल्स दिख रहे हैं जो डिजोल्व नहीं हुए, गर्म पानी मिक्सचर को हमने गर्म कर दिया. सो द वाटर बिकम्स हॉट. हॉट वाटर का सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है. हॉट वाटर विल हैव मोर सॉल्युबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली व्हाट विल हैपन, everything will get dissolved. जो impurities है वो अभी भी डिजोल्व नहीं है. impurities तो अभी भी डिजोल्व नहीं है. तो इसके बाद हम क्या करते हैं, the mixture is then filtered to remove the water insoluble impurities. Mixture is then filtered to remove water insoluble impurities. जो भी impurities water में insoluble है उसको निकालने के लिए क्या किया, filter. So impurities will remain as the filtering membrane, and what we get, the filter. Yes or no? Yes. Mixture is then filtered to remove the water insoluble impurities. So filtering obtained is called liquor. Why it is called mother liquor? Liquor means a concentrated solution. लिकर का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अपना सॉलिड है, अपने को सॉलिड. सो वो फिल्टर क्या किया हमने पहले ठंडे पानी में डिजोल्व किया, ठंडा पानी में डिजोल्व होने के बाद देखने के कुछ पार्टिकल डिजोल्व नहीं हुआ, मिक्सचर गर्म करो, ठंडे पानी में नहीं हुआ, गर्म में डिजोल्व हो जाए, फिर भी जो डिजोल्व नहीं हुआ जाए वो फिल्टर कर दिया, फिल्टरिंग मेम्ब्रेन में वो पार्टिकल्स अटक के निकल गए. अब फिल्टरेट में कौन है, लिक्विड पानी, और उस पानी के अंदर है वो सॉलिड जो अपने को चाहिए. तो दैट लिक्विड वाटर एंड द सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व्ड इन इट, इट इज कॉल्ड. इसके बाद क्या हुआ, इट इज अलाउड टू बॉइल फर्दर. समझिए, द मदर लिक्विड is further boiled to a high temperature. It is further boiled to a high temperature.
Mother liquor is further boiled to a high temperature. What happens after? It is then allowed to cool down, and it is noticed that the solid crystals in the process of cooling begin to settle at the bottom of the container. It is allowed to cool down, and it is noticed that solid crystals in the process of cooling begin to settle at the bottom of the container. तो जब तक वो सॉलिड क्रिस्टल्स बॉटम पे सेटल हो रहा है, आप सेटल होने देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? आफ्टर all the crystals have settled at the bottom, the supernatant liquid is discarded by just tilting the container. By just tilting the container. मतलब क्या है समझो? मदर लिखा था मिल गया, हमने उसको बॉइल और हाई टेम्परेचर, उसके बाद हमने उसको कोल्ड डाउन होने दिया। कूलिंग का प्रोसेस क्या हुआ? सॉलिड के क्रिस्टल्स सेटल होने लगे। अब जब ये सेटल होने लग गए तो हमने नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, सेटल हो रहा है, सेटल हो रहा है। क्रिस्टल्स कंटेनर के बॉटम में आस्ते आस्ते उसका क्वांटिटी बढ़ रहा है। जब तक वो क्रिस्टल्स का क्वांटिटी बढ़ रहा था हमने उसको सेटल, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा था सॉल्यूशन। जब सारे क्रिस्टल सेटल हो गए और कोई क्रिस्टल सेटल होता हुआ नहीं दिखा, तो हमने सिर्फ कंटेनर को क्या किया? टिल्ट किया। वो जो लिक्विड होगा जिसके अंदर से सॉलिड क्रिस्टलाइज होके नीचे सेटल हो गया। सॉलिड क्या हो गया? क्रिस्टलाइज होके नीचे सेटल। हमने बस कंटेनर को टिल्ट किया था कि ऊपर जो लिक्विड है वो बहेगा, फ्लो हो गया। इट विल जस्ट फ्लो अवे। तो अब कंटेनर के बॉटम पे क्या दिख रहा है? अब हम उसको क्या करेंगे? क्योंकि सॉलिड कैसा होना चाहिए, तो क्रिस्टल को हम लोग क्या करेंगे? हॉट एयर ओवन में रखते हैं। हॉट एयर ओवन में रखते हैं जिसमें गर्म हवा का झोंका है, तो क्या करेगा? गीले क्रिस्टल को सुखा लेगा। सर कैलकुलेट ना खर्चा करने में, ओपन एयर में रख दो ना, पंखे के नीचे सुखा लेते हैं। Contain dust. Crystal is wet. गीले क्रिस्टल पे इम्प्योरिटी वापस डस्ट आके पूरे प्रोसेस का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हॉट एयर। हॉट एयर में क्या है? क्लोज, नो डस्ट। मुश्किल से इम्प्योरिटी से सॉलिड क्रिस्टल को सेपरेट किए। अब वापस ओपन एयर में ड्राई करेंगे, सूख तो जाएगा बट इम्प्योरिटी उसके सरफेस पे चिपक जाएगी। एक और प्रॉब्लम, कई बार क्या होगा? सॉलिड का क्रिस्टल सेटल हुआ, सेटलिंग के प्रोसेस में एक आधा इम्प्योरिटीज यहाँ वहां बच गए होते हैं, छूट गए होते हैं मिक्सचर।
वो लोग भी सॉलिड के साथ चिपक जाए और कंटेनर के नीचे सेट। अब क्या करें, व्हाट टू डू? वो जो कंटेनर है जिसके बॉटम पे वो सॉलिड के क्रिस्टल्स है, उसको हॉट एयर ओवन में ड्राई किए, ड्राई करके उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ऑब्जर्व किया, देखा अरे यार 3-4 क्रिस्टल उधर किया, सरफेस पे इम्प्योरिटी दिखा। तो क्रिस्टल को धीरे धीरे टैप करके एक फ्लैट कंटेनर में निकाल। फ्लैट कंटेनर में निकालने के बाद वो पार्टिकल्स जिसके ऊपर इम्प्योरिटीज चिपके हुए थे, मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से उसे सेपरेट करके क्या किया, उसको स्लो मूविंग वाटर पास किया। क्या पास किया? स्लो मूविंग वाटर। स्लो मूविंग वाटर क्या करेगा, पार्टिकल के ऊपर से जाएगा और जाते इम्प्योरिटी जाते वक्त इम्प्योरिटी को, लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो, क्रिस्टल वापस हीट किया है और आप सुखा लें, सूख जाए, ड्राइड क्रिस्टल मिल गया। Yes. So after all the crystals have settled at the bottom, supernatant liquid is discarded by just tilting the container. Tilting the container क्यों? Tilting the container allowing the liquid to flow away. Allowing the liquid to understood? Yes or no? Yes. अब क्या हो, the wet crystals are dried in hot air oven. Yes or no? The wet crystals are dried in, if any impurities are seen adhere to the crystal, then they are removed by washing the crystals with slow moving water. Understood? Yes or no? Yes. तो ये मेथड क्या करने का, इम्प्योर सॉलिड को सॉलिडिफाई, प्योरीफाई करना। So what we are doing over here? Impure solid is taken and pulverized. It is made into a fine powder. It is then dissolved in cold water. Cold water में dissolve करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? Mixture is boiled to ensure all the particles get dissolved in water. Mixture is then filtered to remove what? It is filtered to remove what? Filtered to remove the insoluble impurities. Filtrate obtained is called the filtrate obtained is called mother liquor. What does the mother liquor contain? It contains liquid and the solid in its dissolved. The liquid and the solid in its dissolved. Mother liquor में क्या रहेगा? It will contain the PD2V and the in its dissolved form. The mother liquor is further boiled to high temperature. Now what happens? It is then allowed to cool down, and it is noticed that the solid crystals process of cooling begins to settle at the bottom of the container. After all the crystals have settled at the bottom, supernatant liquid is discarded just by
tilting the container. Supernatant liquid is discarded by just tilting the container. The wet crystals are dried in hot air. Hot air around में क्यों dry करते हैं? Because it is closed container. Because it's closed container, impurities again coming in contact with wet crystal is not possible. And when impurities are seen, adhered means stuck to the crystal. Adhered to the crystal मतलब क्या? क्रिस्टल पे चिपका हुआ है. अंडरस्टैंडिंग? चिपका हुआ है अगर तो उसको वापस स्लो मूविंग वाटर से वॉश करके निकाल देंगे. Adhered to the crystals means stuck to the understood? Yes. Remove by washing the crystals with slow moving. सुपरनेटेड लिक्विड क्यों बोला? सुपरनेटेड लिक्विड मतलब वो लिक्विड है जो सॉलिड क्रिस्टल के ऊपर बस फ्लो हो रहा है. तो सुपरनेटेड लिक्विड मतलब वो एक लिक्विड है जिसके बॉटम पे अपना सॉलिड क्रिस्टल और वो लिक्विड का अभी कुछ काम नहीं. Understanding? Yes. So this is the method for crystallization. Crystallization is the method to purify impure solids, and this is simple crystallization. What type of crystallization is it? Simple crystallization. Is it clear? Yes. Please make a note of it. Quickly. Now let us understand what we mean by fractional crystallization. What we mean by fractional crystallization? Fractional crystallization is very good. Your impure solid will be a mixture of two or more such solids which you have to or rather separate. Let us say you have a mixture of urea and glucose. यूरिया हमने को यूरिया भी चाहिए, ग्लूकोज भी चाहिए, अलग अलग करके सेपरेट करके. We want urea and separate, we want glucose separate. तो अब होगा क्या? What will happen? What will happen? We want urea, we want glucose. First half of the process will be the same. Take the solid, pulverize it, make it into a fine powder, dissolve it in cold water, mix it, boil the mixture so that what did not dissolve in cold water dissolves in hot water. Now, still if there is something which is not dissolved, filter, remove. What remains left? The mother liquor, which is containing dissolved solids. Mother liquor contains dissolved glucose, dissolved urea. Heat it, boil it again, and then allow it to cool. What will you know? The higher crystallizing liquid will start solidifying. Out of the two solids, कितने solids हो? तो में से एक जिसका crystallization temperature 7 है, वो पहले सेटल होने लगेगा solution में. So let us say one of the solids, urea, begins to settle down at 80 degrees Celsius. So we notice urea crystal settling down. Something from the solution is settling down in the container. What is the temperature? 80 degrees Celsius. Let it settle down. Let it settle down. Let it settle down. Temperature 80. टेम्परेचर 80 से कम होते होते 70 का जाएगा. अभी कुछ भी सेटल डाउन होता हुआ नजर नहीं आता. Nothing can be seen settling down. So हम क्या करेंगे? एक दूसरा कंटेनर लेंगे और जो सुपरनेटेड लिक्विड है जिसमें अभी भी एक सॉलिड प्रेजेंट है which has to crystallize. वो सुपरनेटेड लिक्विड क्या करेगा? टिल्ट करके
दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करें, पिक करके उसको कंटेनर में ट्रांसफर करेंगे। Why will it be transferred to the other container? Because the other solid has to crystallize. Yes or no? अब जैसे ही उसको दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर किया, तुरंत हम उसको बर्नर पे रखेंगे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। थोड़ा सा मतलब कितना? 100 तक वापस क्यों बढ़ा रहे सर? क्योंकि अपने को श्योर हो कि अब उस सॉल्यूशन में सिर्फ शुगर ही, तो 100 तक बढ़ा, फिर 100 पे कूलिंग स्टार्ट हो, टेम्परेचर 80 पे है, कुछ भी नीचे क्रिस्टलाइज नहीं हो रहा था, मतलब पूरा का पूरा यूरिया पिछले कंटेनर में क्रिस्टलाइज होके सेपरेट हो गया है। अगर वापस 100 तक जाने के बाद जब टेम्परेचर फॉल होता और आता किस पे? 80 पे, और 80 पे अपने को क्या दिखता था? यूरिया का 2-4 क्रिस्टल दिखता था। लफड़ा हो गया ना? ये वो यूरिया है जो ग्लूकोज के साथ अटक के रह गए और पिछले कंटेनर में क्रिस्टलाइज नहीं हुए। अब तुरंत तीसरा कंटेनर ढूंढना पड़ेगा ना, जिसमें लिक्विड को वापस ट्रांसफर करेंगे। कंटेनर 1 में यूरिया को सेटल हो जाना था, गलती से यूरिया सेटल हुए बिना शुगर के साथ चिपक के आ गया। आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर गलती से आ गया तो क्या करोगे? कंटेनर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। इम्प्योर सॉल्यूशन वापस नहीं बना सकते ना तुम कि ठीक है 2000 यूरिया ना चलेगा, भैया तो शुगर ही है ना, हो जाने दो क्रिस्टलाइज। कर सकते हैं क्या ऐसा? नहीं। Can we do that? We cannot. So if we cannot, then what we should do? What we should do? Simple. We must transfer it to the other container. Other container में transfer किए. It is cooling down. 60 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? Sugar will start crystallizing. What will start crystallizing? Sugar. Matter is over. 60 डिग्री पे पूरा शुगर क्रिस्टलाइज हो गया. Matter is over. Understood? Yes or no? Yes. That is fraction. Two different fractions. How many? Two different fractions. Two different fractions. Understanding everything? Yes. Yes or no? Yes. Very good. Fractional crystallization. Fractional crystallization. Understood everyone? Yes. Open your textbooks. Go through crystallization and fractional crystallization. Crystallization and fractional.